Bonjour. Merci à vous d'être là aussi nombreuses, nombreux. Merci à celles et ceux qui ont fait de longues minutes d'attente devant les caisses. Le festival a commencé hier, très très fort. Hier soir, on accueillait le haut-commissaire aux droits de l'homme, Zeid Ra'ad Al Hussein, pour une conversation à la fois généreuse, large, intimiste, sur l'état des droits humains dans le monde. Et c'est la mission qu'on s'est donnée pendant 10 jours dans ce festival, de regarder le monde, de regarder l'état du monde, d'ouvrir un peu les yeux, d'essayer de penser de manière un peu plus large. Et on commence avec cette session aujourd'hui qu'on a appelée Anatomie des genres, qu'on co-présente avec plusieurs partenaires qui sont ici dans la salle, le service Égalité Université de Genève, le service Agenda 21 Ville durable de la ville de Genève et puis The International Service for Human Rights, que je remercie chaleureusement. C'est grâce à ces partenaires qu'on a réussi à mettre en place un événement qui est un peu particulier pour le festival. On va questionner les questions d'identité de genre. On va essayer de s'interroger sur quelles sont les limites qu'on pose dans nos têtes à ces cases, ces normes qui nous enferment. On va essayer de les repousser un petit peu. Et pour ça, on a un très très beau panel. C'est une soirée un peu particulière. On va commencer par une discussion. Notre journaliste modératrice Isabelle Moncada sera en discussion avec Dutee Chand. Et Payoshni Mitra, Dutee Chand est une sprinteuse indienne, sprinteuse olympique, qui va vous raconter son parcours de vie un peu particulier. Et puis ensuite, nous allons regarder 2 films, 2 courts-métrages. Le premier, The Son I Never Had, de Pigeon Pagonis, qui sera présent sur le panel tout à l'heure. Et puis, N'être ni fille ni garçon, un reportage Arte de Barbara Laure, qui, j'espère, vous donnera une vision un peu plus large du thème qu'on traite aujourd'hui. Je voulais vous remercier très chaleureusement, vous inviter à nous suivre pendant ces 10 jours. C'est une très très belle aventure qu'on propose avec ce festival et on espère que vous serez nombreux et nombreuses à la vivre avec nous. J'appelle maintenant sur scène Isabelle Moncada. Merci beaucoup Anne-Claire. Bonjour à tous, merci d'être si nombreux. Alors voilà, j'ai le plaisir de vous présenter Dutee Chand. Certains d'entre vous la connaissent certainement. Fantastique athlète avec son traducteur. Où est-ce qu'il est son traducteur? Il est là. Bonsoir. Et Payoshni Mitra, qui est avocate, qui est l'avocate de Dutee Chand, qui est une militante des droits humains et des droits des athlètes, avec qui nous allons discuter. Peut-être une première question à Dutee Chand. En combien de temps vous traverseriez cette salle? ये आपसे पूछना चाहती है कि यहाँ से वहाँ तक आप कितनी देर में भाग सकती हैं? मेरा जो 100 मीटर बेस्ट टाइम है 11.24. ये तो 10 मीटर है, 1 सेकंड में भाग देंगे. She says her best timing for the 100. Donc elle nous explique que son meilleur temps pour les 100 mètres c'est 11 secondes 2. Donc là il s'agit d'environ 10 mètres. Donc elle le ferait en environ 1 seconde. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur cette passion pour la course à pied et comment vous avez découvert que vous aviez des dispositions particulières pour la course à pied, que vous étiez spécialement rapide? क्या आप बता सकते हैं कि आपको खेल में कब से भाग लेने का जोश मिला और आपको कैसे पता चला कि आप खेल में भाग लेना चाहती हैं? पहले ये बताती हूँ मैं. बेसिकली मैं उड़ीसा की हूँ. मेरी जो फैमिली है टोटल 9 मेंबर, मामा पापा और 6 सिस्टर. 6 सिस्टर में मेरी जो बड़ी दीदी है सरस्वती चंद, वो एक एथलीट है. Donc je viens d'une famille de 9 personnes dans l'État d'Orissa en Inde. Et parmi ses sœurs, sa sœur la plus grande est aussi également une athlète. वो भी 2 बार वर्ल्ड पुलिस ओलंपिक मेडल लिया है 2008 में और 2011 में. तो उन्होंने मुझे देखा कि मैं स्कूल लेवल में जो स्पोर्ट्स हो रहा था इसमें अच्छा परफॉर्मेंस कर रही थी मैंने. तो उन्होंने मुझे स्पोर्ट्स कराने का इरादा था, इसलिए उन्होंने मुझे ज़्यादा सपोर्ट दिया और ट्रेनिंग सिखाया रनिंग के लिए. Her elder sister
Donc sa sœur aînée était déjà une championne aux Jeux Olympiques 2011-2012. Elle était une championne et quand elle a vu que Douti avait à l'école de bons résultats dans le cours d'athlétisme, elle l'a poussée à s'intégrer dans le sport, à s'investir dans ce sport. जब वो फर्स्ट सेकंड आते थे तब ट्रॉफी मिलते थे, वही किताबें पेन वगैरह। तो पुअर फैमिली थी इस टाइम में, तो इसको पाने के लिए मैं अच्छा रनिंग कर रहा था। So initially she was not very Donc initialement, je n'étais pas très motivée à courir, mais quand j'ai commencé à gagner les médailles et les trophées à l'école, alors je recevais des stylos, des bics, des cahiers, des livres. Et comme je venais d'une famille très pauvre et que j'avais besoin de continuer donc ce sport pour pouvoir soutenir mes études, car ma famille ne pouvait me payer mon matériel scolaire. हमेशा मुझे सुबह शाम को रनिंग करना पड़ता था और जब लोग देखते थे कि दूती क्यों भाग रहे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते थे। मुझे पता ही नहीं था कि किस लिए मैं भाग रहा हूँ। दीदी सिर्फ मैं सबको यही बता रहा था कि दीदी ने कहा है रनिंग के लिए, इसलिए मैं रनिंग कर रहा हूँ। तो उस दिन से मुझे रनिंग थोड़ा परफॉर्मेंस भी बढ़ने लगा। स्कूल लेवल में जहाँ जहाँ पार्टिसिपेट किया मेडल भी आने लगा। तो 2006 में जाके भुवनेश्वर स्पोर्ट्स हॉस्टल में ज्वाइनिंग किया, इंटरव्यू दिया मैंने, वो पास भी हो गया। इस दिन से मुझे लगा कि मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स के ऊपर ध्यान देने लगा। C'est pas facile pour vous de traduire parce que Ça va aller, vous faites des tirades. Ça va aller. So she says that there was Donc, ce qui est expliqué, c'est qu'il n'y avait pas de stade dans lequel s'entraîner. Donc, elle courait au bord de la rivière. C'était le seul endroit où vous pouvez s'entraîner. Et quand elle courait à cet endroit-là, les personnes dans le village demandaient pourquoi elle courait, parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi quelqu'un aurait la motivation de courir. Mais au fur et à mesure que je courais, j'ai développé mes compétences et finalement, j'ai pu participer à la sélection pour une école supérieure en sport. Et c'est comme ça que j'ai su que j'étais capable de faire quelque chose à très haut niveau et j'ai pu à ce moment-là m'investir plus dans l'athlétisme. Et à quel moment est-ce qu'elle a découvert qu'au fond elle avait voilà, un avantage, peut-être on peut dire ça du point de vue des autres athlètes biologiques, parce qu'elle était hyper androgénique et qu'au fond elle avait un taux d'hormones plus élevé que les autres athlètes. Comment c'est arrivé? Est-ce qu'elle s'en est rendue compte quand déjà plus jeune, elle s'est dit tiens, je suis plus performante que ma sœur et que mes amis, ou à quel moment est-ce qu'elle s'en est rendue compte? आपको कब पता चला कि आप हाइपर एंड्रोजिनी से लगी हुई हैं? क्या आपको जब आप छोटी थी और भाग लेती थी तब भी आपको पता था कि आप दूसरे औरतों से ज़्यादा तेज़ भाग सकती हैं और आपको कभी अंदाज़ हुआ कि मुझ में शायद कुछ अलग है, या ऐसे क्या हुआ कि आपको पता चला कि आपको हाइपर एंड्रोजिनी है? मैं जब से पैदा हुई इस दिन से लेकर 2014 तक मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था मैं क्या है रियल में, क्योंकि बचपन में घर में लड़की की तरह बड़ी हुई हूँ। लड़की का ड्रेस भी पहना मैंने, सब कुछ लड़की की तरह मेरे का घर में, और पढ़ाई में भी लड़की के स्कूल में भी पढ़ाई किया, कॉलेज में भी वुमेंस कॉलेज, मेरा कॉलेज भी लड़की लाइफ है, तो सारा मेरा लड़की के साइड में किया। तो कभी मुझे फील नहीं लगा कि मैं लड़की से दूसरा है या मुझे कोई दूसरी नज़र में, इस टाइम कोई कुछ दूसरी नज़र में भी नहीं देख रहा था मुझे। जब 2014 में मेरा हाइपरनिज्म केस आया, जेंडर टेस्ट बोल के, इस दिन तक सब मुझे दूसरी बुरा नज़र में देखने लगा और मुझे भी पता नहीं था कि हाइपरनिज्म क्या है। फिर बाद में जब ऑनलाइन हुआ, वैष्णवी मैडम ने मुझे सारा चीज़ समझाया, तो पता चला कि हाइपरनिज्म मेरे अंदर में है करके। So what she says is since she was born. Donc, ce qu'elle explique, c'est quand elle est née en 2014, elle a toujours été traitée comme une fille à la maison. Elle n'a jamais douté de son identité de genre. Elle était toujours habillée en tant que femme. Elle était dans une école de filles et à aucun moment a-t-elle été confrontée à la question de l'identité de genre. C'est seulement une fois que le cas de 2014 a eu lieu, a été rendu public, qu'elle a commencé à se questionner. Et à ce moment-là, d'autres personnes ont commencé à douter de son identité de genre et elle a dû à ce moment-là se renseigner sur ce qu'était l'hyperandrogénité et se renseigner à ce sujet. Elle n'avait jamais suspecté que quoi que ce soit était différent en elle. Et qu'est-ce que ça lui a fait? Comment elle a réagi et elle et ses proches, au fond, comment cette information, elle l'a gérée? जब आपको पता चला कि आपको हाइपर एंड्रोजिनी है तो आपको कैसे महसूस हुआ और आपके आजू बाजू में जो लोग थे उनको कैसे महसूस हुआ कि आपकी हालत ऐसी है? पहले तो पता ही नहीं था कि हाइपरनिज्म क्या है, और हाइपरनिज्म जब बारे में किसको पता ही नहीं था। उससे पहले जब जेंडर टेस्ट इशू करके मीडिया में हाईलाइट हो गया था, तो सारा लोग सब हम उड़ीसा में पुरुष हार्मोन बोलते हैं,
तो मुझे सब बोले कि तुम लड़की नहीं है, लड़का करके पूरा वायरल हो गया था पूरे लोकल न्यूज़पेपर में। तो जो मेरे फ्रेंड थे, पहचान लोग थे, सब मुझे लड़के की तरह देखने लगा। सब बोले कि तू लड़का है, तू लड़की नहीं। हमारे जो फ्रेंड थे आसपास में, मेरा वो सब कुछ छोड़ के दूसरी चला गया। मुझे लाइक नहीं किया उन्होंने। जो जिस फ्रेंड के घर को मैं जाते थे, वो घर को भी आने के लिए इसका पेरेंट्स मुझे मना कर दिया। जिस काम में मैं लड़की के साथ जुड़ी हुई थी वो मुझे सारा अड़बड़ करने लगे सब। तो बहुत बुरा लगा। तो इस टाइम में मुझे पता ही ना चलता था कि हाइपरटेंशन क्या है, किस लिए मुझे निकाल दिया गया। फिर बाद में सारा केस जब हुआ, मैडम ने सब बताया, तभी मुझे पता चला हाइपरटेंशन मेरे अंदर है करके। So what she says is initially she didn't. Donc, ce que Duty Chan nous explique, c'est qu'au départ, elle ne savait pas ce qu'était l'hyperandrogénéité et elle ne savait pas ce que c'était. Et avant de même comprendre ce que c'était, tout le monde ne doutait de son identité de genre. Tout le monde, les gens déclaraient que ce n'était plus une femme et elle a perdu énormément d'amis suite à ceci. Elle a perdu la confiance de personnes dont elle était proche, des personnes qui ne souhaitaient plus l'inviter à leur domicile. Il y a un certain mot qui est utilisé pour parler des personnes intersexes dans la région d'Orissa et elle a été identifiée immédiatement avec quelque chose qui n'était pas l'identité qu'elle s'était attribuée. Elle s'est sentie très mal. Et c'est seulement après que Payoshni soit venu lui ait parlé de la condition d'hyperandrogénéité et qu'elle a pu comprendre ce qui se passait. Mais à ce moment-là, elle n'avait aucune information et elle ne connaissait rien de ceci. Elle a même été dévastée par le manque de soutien de son entourage. Payoshni Mitra, vous vous souvenez de votre rencontre avec Duty Chand? It's a long story. Oui, c'est une longue histoire. Je travaillais avec d'autres athlètes qui avaient dû passer ce qu'on appelle des tests de vérification de genre avant que la régulation sur le règlement sur l'hyperandrogénéité soit mise en lumière. Et donc j'ai été appelée par une journaliste au moment où Duty a été suspendue et elle m'a demandé si elle connaissait ce cas, mais je ne connaissais pas ce cas. J'ai essayé de rentrer en contact avec Duty immédiatement à travers d'autres amis journalistes afin de chercher son numéro de téléphone. Et quand je lui ai parlé, la première chose que je lui ai dit, et je me souviens de lui avoir dit que si les gens te demandent si tu avais été soumise à un test de genre et s'il y avait eu un test d'hyperandrogénéité, mais en tant qu'activiste dans ce secteur, je comprends parfaitement que les réglementations sur l'hyperandrogénéité ne soient pas si différentes que les tests de vérification de genre du passé, mais il a été très important pour Duty, ayant vu d'autres athlètes vivre ceci, de comprendre que ce n'était plus un test de genre, mais un test sur l'hyperandrogénéité. Ceci voulait dire que les personnes ne douteraient pas forcément de son genre, mais évidemment, au début, elle ne me connaissait pas, elle n'avait pas confiance en moi. Et donc, elle a été ramenée par avion de Bangalore jusqu'à son village en Orissa. Et j'ai à ce moment-là décidé d'aller la rencontrer. À ce moment-là, je n'avais pas été encore en poste au nom du gouvernement. Donc, j'ai simplement été la voir. Au début, elle n'avait pas confiance en moi quand je lui ai parlé, mais je savais qu'il n'y avait pas énormément de gens qui travaillaient dans ce secteur ou qui connaissaient les réglementations en Inde. Et donc, j'y suis allée la voir. Et Duty, à ce moment-là, n'avait pas l'air d'être très affectée par ceci. Elle avait un sourire sur son visage tel qu'elle l'a aujourd'hui. Et elle me semblait extrêmement résiliente. Il a fallu plusieurs semaines pour la convaincre que j'étais là, non au nom du gouvernement ou de la Fédération des athlètes, mais que j'étais là parce que j'avais travaillé avec d'autres athlètes. Et à ce moment-là, nous avons commencé à travailler ensemble. Et ce qu'il faut préciser aussi, c'est que ces tests de genre, ce ne sont pas tous les athlètes qui doivent les subir. Hein. Ce qu'il y a de questionnant dans cette affaire, c'est qu'au fond, certains athlètes sont soumis à ces tests et d'autres pas. Et voilà. Vous pouvez nous expliquer pourquoi ces tests ont été faits? Est-ce que c'est d'autres athlètes qui ont demandé, qui étaient jaloux de ces performances, ou qu'est-ce qui s'est passé?
Eh bien, la première chose est que les tests de vérification de genre ont été mis en place dans les années 60 et en 1966, pour être spécifique, pour être clair. Et l'idée de vérification de tests du genre a ensuite été questionnée. Il y avait beaucoup de débats. Et ensuite, dans les Jeux olympiques de 2000, ils ont admis qu'ils ne pourraient plus faire de vérification de genre pour tous les athlètes. Les tests de vérification de genre, lorsqu'ils ont commencé, étaient simplement des examens physiques des athlètes femmes, mais ensuite, ils se sont devenus des tests plus, entre guillemets, sophistiqués. Ils ont commencé à regarder les chromosomes, les hormones et d'autres aspects de la physiologie. Mais pendant les Jeux olympiques de 2000, ils ont dit qu'ils voulaient forcer tous les athlètes femmes à se soumettre à ce test, mais uniquement s'il y avait une plainte contre un athlète. Et à ce moment-là, le test serait mis en place. Ensuite, nous avons vu en 2009 le cas très spécifique de Caster Semenya. Et puis en 2011, l'Association internationale de la Fédération des athlètes, donc l'organe qui gère tous les athlètes du monde, ont proposé cette nouvelle réglementation sur l'hyperandrogénisme. Et donc, des réglementations de ce type ne sont appliquées qu'aux athlètes femmes et elles sont conduites seulement dans les cas où il y a une plainte posée contre une athlète. Elle disait que c'était des réglementations selon l'hyperandrogénéité et non un test pour définir le test sur l'hyperandrogénie. Et il y a eu à ce moment-là des tests partout dans le monde pour des athlètes. Et puis, ces athlètes ont pu convaincre les commissaires des sportifs que le genre ne pouvait être défini par ces tests. Donc, ils sont débarrassés du terme vérification de genre, mais ils avaient les mêmes procédures et en ont changé le nom et les ont appelés les réglementations sur l'hyperandrogénie. C'est bien la réglementation qui dit que des femmes avec des hauts niveaux d'androgènes et sans insensibilité aux androgènes n'aura pas le droit de rentrer en compétition. Et à quelle hauteur ce taux est-il placé? Eh bien, ils disent que le niveau d'androgénie doit être dans des taux similaires. Le taux moyen doit être similaire à celui inférieur à celui des hommes. Eh bien, c'est quelque chose de compliqué parce que c'est une question humaine, mais malheureusement, je suis obligée d'utiliser ces définitions scientifiques également, enfin liées à la réglementation, si vous voulez que je puisse en parler. Je reviens à Dutee Chand. Alors vous étiez au top de votre carrière nationale, vous avez battu des records, et puis cette nouvelle est tombée, vous l'avez dit, vous avez perdu vos amis, des gens se sont détournés de vous. Est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit, j'abandonne le sport, l'athlétisme de haut niveau, la course à pied? जब ये केस हुआ था, आप खेल में बहुत अच्छी थी और बहुत सारे गेम्स में आपने क्वालिफाई भी किया था, और जब ये केस हुआ तो आपके बहुत सारे दोस्त भी आपको छोड़ के निकल गए. तो क्या जब ये हुआ आपको लगा कि आप खेलना छोड़ देंगी या तो कुछ और करेंगी, कुछ अलग करेंगी? क्या आपको ऐसा लगा? मेरा जो पहला इंटरनेशनल है 2012 में जूनियर लेवल में खेल रही थी मैंने. एशियन चैम्पियनशिप में लगी, वर्ल्ड चैम्पियनशिप तक मैंने खेला, मेडल भी लिया, गोल्ड मेडल जीता. सीनियर लेवल में भी पार्टिसिपेट करके 2013 में मेडल भी लिया. लेकिन 2014 में जब वो ऐसा इश्यू हो गया तो मुझे सब बुरा नज़र में देखने लगा, सब तो छोड़ के चला गया. जब हम नेशनल कैंप होते तो एक रूम में 2-3 लड़की रहते हैं, तो उस टाइम में मुझे सिंगल रूम दिया गया. जो साथ में मेरे रुक रही थी इसको भी हटा दिया गया था. तो बहुत बुरा लग रहा था. मैंने हमेशा सोच रहा था देश के लिए मैंने इतना मेहनत किया, इतना खेला, इतना मेडल भी दे चुका है पहले से. वही लोग मुझे ऐसे नफरत कर रहे हैं मेरे साथ, मुझे सपोर्ट नहीं दे रहा है. तो बहुत दुख लगा था. लेकिन स्पोर्ट छोड़ने का कभी भी सोचा नहीं था कि मैं स्पोर्ट छोड़ दूं करके. सिर्फ वही मन में घुसा हो रहा था कि जो लोग ने मुझे ऐसे पॉलिटिक्स किया इसका बुरा हालत हो जाए. भगवान को प्रेयर किया था हमेशा कि मुझे जो मुझे को ऐसे बुरा कर रहे हैं इनका भी एक दिन ऐसा ही हो. तो लेकिन हमेशा सोचा था कि कैसे मैं ट्रैक को वापस आऊँ, किस तरह से करूँ मैं फिर खेल पाऊँ. सबको जाके रिक्वेस्ट करना पड़ता था, सबको जाके बोलना पड़ता था, लेकिन कभी सोचा नहीं कि मैं स्पोर्ट छोड़ दूँ करके.
Donc en 2012 et 2013, Dutty a participé à de différentes compétitions au niveau national et au niveau mondial. Elle a gagné énormément de médailles. Elle s'était même qualifiée pour des compétitions internationales. Mais au moment du cas de 2014, beaucoup de choses ont changé. Et ce n'était pas seulement dans son cercle personnel, mais également dans son cercle professionnel, au niveau des athlètes. Elle a senti énormément de pression de la part des personnes qui, jusqu'ici, applaudissaient ses résultats, tout à coup lui tourner le dos. Et quand on vient pour un match, une course nationale, il y avait des pièces où toutes les femmes se changeaient, s'entraînaient, mais tout à coup, elle était seule. Elle était très fâchée. Elle se sentait absolument trahie par les personnes qui la soutenaient jusque-là, qui soutenaient ses résultats. Et elle a été extrêmement blessée par cette perte de confiance et par les personnes qui étaient jusque-là à ses côtés. Mais à aucun moment n'a-t-elle eu l'idée de quitter son sport. Ce n'était pas une option pour elle. Elle s'est sentie trahie, mais à aucun moment ne s'est-elle dit qu'elle allait changer de carrière. Et aujourd'hui, elle se dit qu'elle doit se battre pour ses performances sportives et pour avoir le droit de concourir en tant que femme et pour les autres athlètes qui sont dans la même situation qu'elle. और आज जो है केस के दौरान आप ये चाहती हैं कि आप फिर से वापस आएं और खेलें और सारे मेडल्स जीतें और जैसे आपके जैसे और जो औरतें हैं दुनिया भर में जिनको भी ऐसे हक छीने गए हैं उनको भी वापस आने का मौका मिले। पहले तो मैं धन्यवाद दूंगी जो 10 लोग टीम मेरे साथ काम कर रही थी, पॉइसने मैडम, जिम बंटिंग, कार्लोस, कटीना, बहुत सारे लोग मुझे काम कर रही थी मेरे केस को लेके। तो उन्होंने मुझे खेलने का मौका दे दिया था क्योंकि मैं सिर्फ 3 महीना ट्रेनिंग बंद किया था उधर जाने के टाइम में। लेकिन 2015 में मेरा रिलीव हो गया था, खेलने का मौका मिल गया था। उस दिन से मैंने खेला। तो खेल अभी जो केस है अभी तो मेरा ख्याल से मुझे तो रिलीव है खेलने का। और 2 दिन से पहले प्रेस रिलीज हुआ, आपको पता होगा कि 4 शॉट्स को के लिए कुछ नया रेगुलेशन आएगा, लेकिन 100 टू 100 तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे ख्याल से मुझे उससे दिक्कत नहीं होगा। तो जैसे खेलती थी पहले ऐसे हमेशा स्पोर्ट्स के ऊपर ज़्यादा ट्रेनिंग करूँगी, फोकस करना है मुझे, क्योंकि केस का टेंशन नहीं रहेगा तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे सकती ट्रेनिंग में। तो केस क्लियर हो जाएगा तो फिर ट्रेनिंग में ज़्यादा ध्यान दूँगी और देश के लिए मेडल लूँगी, क्योंकि अभी मैं ज़्यादा उम्र की नहीं हूँ, 22 की ईयर की, और 5-6 साल खेलना है। और 5-6 साल के अंदर में हमारा 2 ओलंपिक आ रहे हैं, 2020 ओलंपिक और 24 ओलंपिक, इसमें फोकस करके ट्रेनिंग करूँगी। So first of all, she would like to thank the whole team that has been behind her back with the case, including Payushni, who has been counseling her for the longest time. Qui l'a soutenue depuis très longtemps. Jim Bunting, Carlos Eo et Bruce Kitch. Voilà. Elle ne savait peut-être pas leur nom, voilà, c'est pour ça que je l'ai dit. Donc ce qu'elle dit, c'est qu'elle a beaucoup de chance dans le fait qu'elle a dû arrêter ses entraînements que seulement pendant 3 mois et qu'elle n'a pu revenir immédiatement après, parce que c'est un sport où il faut continuer à s'entraîner. Donc elle s'entraînait à la maison et elle pense qu'elle est toujours jeune, elle n'a que 22 ans, elle a encore 6 ou 7 ans de carrière devant elle. Elle se voit dans les 2 prochains Jeux olympiques auxquels elle pourra participer et elle espère pouvoir continuer le travail qu'elle a fait jusqu'à présent. Elle a également donné la raison pour laquelle les courses à longue distance seront touchées par les tests d'hyperandrogénie, et elle pense que sa discipline sportive sera épargnée et donc elle pourra gagner des médailles. Et juste une dernière question à vous, Payushni. Où est-ce qu'on en est dans les droits de ces athlètes à concourir dans leur catégorie et comment vous voyez l'avenir pour Dutty Chand et pour toutes les autres? Brièvement. Sure. So quickly, D'abord, il y a quelques jours, l'Association internationale de fédération du sport ont dit qu'ils allaient en retirer cette réglementation sur l'hyperandrogénie qui a été remise en question. On n'a pas encore d'informations officielles, mais ça veut dire qu'elle pourra s'inscrire aux compétitions sans problème.
Which means that only athletes in 400, 800 and 1500 meters will be les athlètes de 400, 600 et 800 mètres seront touchés. Donc, Duty ne sera pas touchée par cela. Et donc, ça va être un soulagement pour elle, même s'il faut attendre le verdict final. Mais c'est déjà la fin à un combat qu'elle a mené depuis 3 ans et demi. Merci beaucoup, merci Payoshni Mitra, merci à Duty Chand d'être venu jusqu'ici. Merci à vous d'avoir si bien traduit. Et elles sont là, toutes les deux avec nous, donc après les films et au moment de la discussion avec la salle, si vous avez des questions, bien sûr, elles répondront volontiers. Et on se retrouve tout à l'heure après le visionnement des 2 films pour la suite de la discussion. Merci.